आसाम के दारंग जिले में तजावुजात हटाने की एक मुहिम के दौरान पुलिस और मकामी मुजाहिरीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाए के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 2 अफराद जान बहक हो गए। इस तसादुम में मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी डंडों का खूब इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई मकामी अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं। आसाम हुकूमत ने इस मामले में अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। तसादुम के दौरान गैर इंसानियत सोच हरकत करने वाला फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर मुल्क भर में बीजेपी आसाम हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है और तशद्दुद के लिए रियासती इंतजामिया को जिम्मेदार बताया जा रहा है। যিজন কেমেৰা পাৰ্চনে যিজন পৰি থকা ব্যক্তিজনৰ গাত জঁপিয়াইছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে, সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ। তেওঁ পলাইছিলে, পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া CIDৰ জিম্মালৈ গৈ আছে। বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা এই ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু এটা চৰ্চা হৈছে ছাৰ। এজন আৰক্ষী বিষয়াও তেওঁ গুলি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত ঠুগুৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গতিকে তদন্তাধীন সকলো বস্তু ওলাব আৰু বহুত কথা ওলোৱা নাই, বহুত কথা ওলাইছে। গতিকে সমুদায় বস্তু ওলোৱা নোলোৱা সমুদায় বস্তুৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব। ছাৰ আজি বিধায়কেও কৈছে আৰু বাকী হ'ব, মই পুলিচ, মই বিধায়ক